हेलो, माई सेल्फ तनय किशोर मिश्रा। आज हम डिक्शनरी के एडवांस कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरी हमने क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। नेस्टेड डिक्शनरी हम बनाने जा रहे हैं और उस नेस्टेड डिक्शनरी पे मैनिपुलेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, डिक्शनरी में हम पेयर वैल्यू को स्टोर करते हैं, बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑफ देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया और उस फाइल में एक डिक्शनरी बना ली जिसका नेम है स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट में हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम इनपुट करने हैं और उनके मार्क्स इनपुट करने हैं। सो फर्स्ट हमने क्या कर रखा है, इनपुट करा लिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव। तो हमने यहाँ पे इनपुट करा लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दैट नंबर इनपुट कराने के बाद हमने लूप को रन किया। दैट लूप इज फॉर आई इन रेंज अप टू द नंबर विच यू आर इनपुट। देन अब हमने यहाँ पे सबसे पहले नेम को इनपुट कराया। नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, देन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम इनपुट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ कहा फिजिक्स, दैट इज इन इंटीजर, इनपुट फिजिक्स मार्क्स, then chemistry marks, then math marks. After that इस तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स और नेम को डिक्शनरी में स्टोर करना है। तो डिक्शनरी में स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक लोकल डिक्शनरी क्रिएट किया। इस डिक्शनरी में नेम को हमने की बनाया और वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक अनदर डिक्शनरी हमने ले लिया, दैट इज, और it's better ki we can first try with list. So physics marks, chemistry marks and maths marks. Now we can add this in a student dictionary. Name is a key and value is a list, physics, chemistry and maths. Now after that what I want its print a student name, 3 subjects marks and total. So what we do, first of all हमने यहाँ पे header print कर लिया, print name /t for tab space, physics marks again /t, chemistry marks again /t and maths marks. Then start the loop. Student is a dictionary and dictionary always return key or value. So first we start, key is a name and value is a marks. Fine. From student dot items. Items is a method that return key and value. Now you can print name of the student and marks is itself what? Dictionary. Marks is itself list. So what I do, we can again print one by one and add total in a t. T is equal to sum of marks. So what we receive? Total of all marks. Then we can print marks of 0, then end equal /t,
tab space, then marks 1 and marks 2. There are 3 marks in a dictionary. So we can print one by one. At the end, we can print total of all 3 marks. Then at the end, we can print t value. Now you can save this with any name, but I am saving that file with py test.py name, and it can save, and then we can start execution. Now we can run that program. हमने प्रोग्राम को रन किया और ऐसे कि 3 स्टूडेंट होंगे. पहला स्टूडेंट का नेम है रमन. रमन को हमने 55, 66 एंड 77 मार्क्स दिए. सेकेंड एज कमल 66, 65, 64. Now third is Manoj, and Manoj have 77, 88 and 76. Now there is an error. Error is what? It's a little bit mistake of typing mistake. I am writing print somewhere wrong. Print, where is print? Print. I am somewhere in print. The name print is not defined. Did you mean print? Yes, that is print. So typing mistake cannot be ignored anyone. Now I say 3 students के name. Tarun have 55, 66 and 77. Manoj 66, 77, 88, and Kamal, that is 66, 55 and 87. Now you just see name Tarun have this marks, and total is 198. Manoj have 231 and Kamal have 208. So we can also do that. We can store marks in a dictionary, not in a list. Marks in a dictionary, so we can also precise the thing. How we can precise? Now that time we don't know कि marks 0 is a physics or chemistry or math. But if you store the value in a key and value pair, so you have knowledge. Yes, first is physics, second is chemistry, and third is maths. So we can do that. Now next thing I am going to do. There are so many methods in a dictionary. The first I want to create dictionary with the from key method. How we can create dictionary with the from key? So from key is a method that return dictionary with defined key with default value. Fine. Defined key with default value. Like I am going to create from key, and the key is math, physics and chemistry, and the default value for all is 50. Now you just see that there is a dictionary created that have math, physics, chemistry. There are 3 key and all are 50 mark. So from key is a method of dictionary that return dictionary with default value. Fine. Now I want to remove this. How we can remove that? By the use of del key, del and di. Di is the object of dictionary. There is one more thing in a dictionary, that is what? Dictionary. I want to create a dictionary with like 101 is a employee number, and itself value is a dictionary. How we can create that? Like say I am name. Name is what? Raman. Then age or date of birth, anything you can store that.
And third, salary. Salary is like suppose this. So you can also do like that. So dictionary is a very important in a Python for storing multiple value with key and value. Key never duplicate. Fine. So today topic is only dictionary. So how we can do programming in a dictionary, I can discuss that. Anyone have any problem, then you can just comment it, and please like and support so that we can develop more and more better things. Thanks. Much.